to partner with we are very happy to partner with the Sports Authority of India and TOPS program and to provide this solution to all of you. So we are very happy to be associated with this program. मुझे पता है कि आप सब लोग टॉप्स के डेवलपमेंट एथलीट्स हो, आपके कोचेस है, आपका जो ट्रेनर्स है या स्पोर्ट्स साइंस स्टाफ है, तो आपकी जो एथलीट्स को मॉनिटरिंग करने की रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये एक सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। अभी जो मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ उसके अंदर एक मैं डेमो सिस्टम का आपको डेमो दिखाता रहा हूँ। तो फीचर्स मेरा मैं मेजॉरिटी कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू नहीं दिखा रहा हूँ, मैं हमारा जो सिस्टम है जो एथलीट एज ए एथलीट आप देखोगे उसी सिस्टम को मैं आपको दिखाने का ट्राई करूंगा ताकि जब आप इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे यू विल बी एबल टू यूज द फीचर्स। सो आई एम गोइंग टू लॉग इन एज अ एथलीट. It's just a demo athlete. This is not a real athlete, Pankaj Pandey. He's just a demo athlete that we have created, and I'm going to log in as that particular athlete. I'm showing you a mobile view, so that means you will actually see the athlete monitoring application as it is appearing on the screen right now. But just to make it more readable, from time to time I'll switch it to a web view as well. So मतलब अभी मैं आपको मोबाइल में आपके कैसे दिखेगा ये दिखा रहा हूँ, मगर आपको बीच बीच में मैं वेब एप्लीकेशन भी दिखा दूंगा ताकि वो पढ़ने में आपको सब लोगों को आसान हो जाएगा। गोपाल जी, इज इट पॉसिबल, क्योंकि ये जो मैं को होस्ट जैसे बन गया हूँ ना, तो मुझे सारे प्रेजेंटेशन के बीच में कौन कौन एंटर हो रहा है ना, ये सब कुछ दिखते जा रहा है। सो इज इट पॉसिबल टू स्विच इट ऑफ? हाँ जी, आपको विजिबल है प्रॉपर्ली? जैसे कितने लोग वेटिंग रूम में हैं ये बार बार बीच में आ रहा है प्रेजेंटेशन के, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग इज इट पॉसिबल टू स्विच इट ऑफ? I will try. No, I will try. So if it is not, then I'll just ignore and I'll move forward. Okay, we'll try. Okay. So एथलीट मॉनिटरिंग सिस्टम का पर्पस ये है कि आपका एज अ एथलीट जो हेल्थ है, आपका जो वेलनेस है, इसको मॉनिटर करना। हेल्थ एंड वेलनेस को मॉनिटर करने का मतलब ये है कि आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, जैसे अगर आपके कोचेस को पूछने हैं, आपके स्टाफ मेंबर्स को पूछने हैं, या फिर इवन एज एन एथलीट आपको पूछना है, तो इन चीजों को आप इजीली इस सिस्टम के थ्रू देख सकते हैं। अब हम एक्चुअल सिस्टम के फीचर्स जो है वो सिस्टम में एंटर करके दिखाएंगे। आपको मोबाइल, हर एक जो एथलीट है हर एक को एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। You can use that login ID and password to log into the system. Please pay attention to the URL which is at the top. जो URL है सिस्टम का वो ये है app.athletemonitoring.in। आपको इस URL पे जाना है। आप जब मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी जब सिस्टम में जाने का ट्राई करेंगे तो आपको ये पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू कनेक्ट टू अ .com सर्वर और डू यू वांट टू कनेक्ट टू अ .in सर्वर। तो आपको उसमें से .in सर्वर को सिलेक्ट करना है, और वो .in सर्वर को सिलेक्ट करने के बाद में आप इस सिस्टम के अंदर आएंगे। इन दोनों का फर्क ये है कि .in मतलब आपका पूरा जो डेटा है सिस्टम में वो इंडियन सर्वर के ऊपर रखा जाएगा। ये सर्वर्स पूरी तरह से सेफ है, आपका डेटा कंप्लीटली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उस तरह से उसकी सिक्योरिटी मेंटेन की जाएगी। डेटा कंप्लीटली प्राइवेट होगा। प्राइवेट होगा मतलब क्या है कि सिर्फ आप, आपके जो टीम मेंबर्स है और आपके कोच जो है, जो आपके सिस्टम में एक्सेस दिया हुआ है, उन्हीं को आप सिर्फ आपका डेटा देख पाएंगे, बाकी और कोई भी आपका डेटा नहीं देख पाएगा। So to log into AMS, all you have to do is enter your login ID and password, which you will receive after like at some stage after this presentation. And you have to press the sign button. Once you come into the system, you will see different options that you are looking at the screen right now. I'm going to begin from the third option from the left, which is wellness. So wellness, ये third option जो left से है उसके वहां से आज हम AMS के फीचर्स का स्टार्ट करेंगे। wellness का मतलब ये है कि आपका डे टू डे जो मतलब आपको आपका स्वास्थ्य कैसा है, how you're feeling today, that can be like asked, that can be assessed in a systematic manner. So I'm just going to show you some of the questions that you may be asked to answer. So after clicking on wellness,
you will see a questionnaire like this. It is a color coded questionnaire, and there will be just a few questions. It is very easy to select the answers of these questions. It's not going to take a lot of time. At the most you will be required to spend 10 to 15 seconds. आपको 10 या 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस को भरने में। और जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो उससे आपको समझ में आता है कि वेलनेस मतलब क्या है एग्जैक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ये हो सकता है कि डू यू फील टायर्ड टुडे, मतलब आपको थकान महसूस हो रही है क्या। ये क्वेश्चन बेसिकली आपके फटीग से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चंस आपको करना क्या है कि यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट वन ऑफ द आंसर्स हियर। तो आपको अगर बिल्कुल थकान नहीं लग रही है, इफ यू आर नॉट फीलिंग एनी फटीग एट ऑल, you can select the first option, which is no fatigue. And then if there's some minimal level of fatigue, then there's a second option to be selected: better than normal, normal, worse than normal, very fatigued and exhausted. अब ये आप ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन पूछने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। जब भी आप ट्रेनिंग करते हो, आप सब लोग एथलीट हो, सब डेवलपमेंट एथलीट हो, मतलब काफी अच्छा लेवल पे आप परफॉर्म कर रहे हो। जब आप ट्रेनिंग करते हो तो ट्रेनिंग के कारण थकान प्रोड्यूस हो जाती है, फटीग तैयार होता है। तो ये जब आप क्वेश्चनर आपको दी जाती है, टिपिकली ये क्वेश्चनर आपको एवरी डे मिल सकती है। ऑफ कोर्स ये आपके कोच के ऊपर डिपेंड करता है, जितने बार ये क्वेश्चन यूज करनी है। आपके कोच या फिर आपके जो फिजिकल ट्रेनर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट है, दे विल डिटरमिन कि आपको कितने बार ये क्वेश्चन भेजने हैं। बट हो सकता है आपको डेली ये भी क्वेश्चनर आ जाए। और ये क्वेश्चनर यूजुअली आपको मॉर्निंग में ट्रेनिंग के पहले भरनी होती है। इसका पर्पस ये है कि अगर आपको कल के ट्रेनिंग से आपकी रिकवरी नहीं हुई है, अगर आपको थकान लग रही है, अभी भी फटीग है, तो आपके ट्रेनर या कोच जो है उनको ये क्वेश्चन के आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। और उनको अगर ऑलरेडी पता है कि आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है या फिर जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, डू यू फील सम मसल सोरनेस। मसल सोरनेस मतलब क्या है कि आपके कोई भी बॉडी में मसल्स है जो अभी भी सोर लग रहे हैं, मतलब अभी भी मसल में दर्द हो रहा है, थकान सी है मसल के अंदर। स्पेसिफिकली सोरनेस आप समझते हैं सब लोग, मसल सोर लग रहे हैं क्या। तो इससे क्या होगा कि उनको फीडबैक मिलेगा कोच को, कोच उसके हिसाब से, तो फिर अगर आपको रिकवरी नहीं हो रही है तो कोचेस को टाइम मिलेगा आपके ट्रेनिंग में कुछ अगर परिवर्तन करना है। इफ द कोचेस वांट टू चेंज योर ट्रेनिंग अ बिट डिपेंडिंग अपॉन योर आंसर्स, they can do that. So what you have to do is answer these questions as honestly as you can. And when I say honestly, it means that ये जो आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपके कोच पूछ रहे एक तरह से, या आपके ट्रेनर्स पूछ रहे। इससे आपका ट्रेनिंग में कम ज्यादा करना है तो वो ट्रेनिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। पर्पस ये नहीं है कि आपको बहुत एवरीडे अच्छा लग रहा है और या फिर इससे कारण आपको कोई नंबर्स आपके बढ़ रहे हैं या फिर आपका जो भी टॉप्स के एंगल से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज फॉर योर ओन हेल्थ, दिस इज फॉर योर ओन वेलबींग और योर ओन वेलनेस। एंड इस तरह से मॉनिटरिंग करने का जो सबसे नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि आपकी इंजरीज को मिनिमाइज किया जाए। All of you are aware that injuries are part and parcel of sports, but currently the emphasis is that can the injuries be avoided? Can the injuries be minimized? And how can that be done? So the first thing which is to be done is to monitor the athletes very, very closely on a daily basis. So before the athletes come for training, these questions have to be asked to the athletes and a feedback can be taken. And depending upon the feedback, if any change is required to be done in the training, that change can be done. And that is the purpose of asking these questions. So I'm just going to answer as if I'm an athlete so that we can move forward here. So suppose I said, do you feel tired today? I'm saying that I'm feeling worse than normal. Next question is, do you feel some muscle soreness? So suppose I'm feeling actually very tight, then I'm selecting this second last option, very sore, tight. And you can see that the answers are color coded. कलर कोडेड मतलब क्या है कि जो आंसर्स ग्रीन में है या एकदम लाइट ग्रीन में है वो दिखा रहे कि आप फ्रेश हो, आप रिकवर्ड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रेड की तरफ आंसर जा रहे हैं या फिर जो मरून हो रहा है कलर, उसमें क्या है, उसमें क्लियरली पता चल रहा है कि दैट मीन्स देयर इज अ हायर रिस्क इन दिस पर्टिकुलर केस।
द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हाउ इज योर जनरल हेल्थ, कि आज आपकी तबीयत कैसी है. दैट इज अ वेरी प्राइमरी क्वेश्चन बिकॉज एवरी डे दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड. आर यू फीलिंग ओके? आपके कोचेज ऑलरेडी पूछते हैं ये इन सारे आंसर्स को. आई एम श्योर कि जब भी आप ट्रेनिंग पे जाते हो तो कोचेस पूछते हैं आपसे कि हाउ इज योर हेल्थ, या फिर आज आपको थकान तो नहीं लग रही, आपके मसल्स को कहीं सोरनेस तो नहीं है. तो इन क्वेश्चंस को आपको आंसर करते जाना है. जैसे मैं बता रहा हूँ कि ओके आई एम फीलिंग ओके टुडे, मतलब कोई तबीयत खराब नहीं है मेरी, बट मेरा थोड़ा सा मसल सोरनेस है एंड आई एम फीलिंग ओके, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्लीप लास्ट नाइट, मतलब आपने कल रात को कितने घंटे आपकी नींद हुई है. यू हैव टू गिव योर एस्टिमेट. मोटा मोटा आपको बताना है कि कल रात को आपने कितने घंटे नींद आपको मिली है. आंसर जैसे आप अलग अलग कैटेगरीज देख रहे हैं, मोर देन 10, 9 to 10, 8 to 9, 8, 7 to 8, 5 to 7, 5 और लेस. अगेन आपके क्या है कि अगर नींद किसी कारण कम हुई है, सपोज आपके कोई एग्जाम थे और एग्जाम के लिए आपने रात को काफी पढ़ाई की और उसके कारण आपकी नींद कम हो गई, या सपोज you were traveling and because of the traveling you couldn't get enough sleep and you have not slept well. So उस केस में आपको अगर नींद कम हुई है, या फिर सपोज यू हैव ट्रैवल्ड इंटरनेशनली एंड आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया your body clock has not adjusted properly and as a result you are not able to get enough sleep. So उस केस में हो सकता है आपको नींद कम आ रही हो, या हो सकता है you might be undergoing some kind of mental stress because of some problem at home because of which you are not able to get sleep. तो जो भी कारण हो, उसके कारण अगर आपकी नींद कम हुई है तो उस आपको रिपोर्ट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वालिटी ऑफ द स्लीप. हाउ वाज योर स्लीप लास्ट नाइट, मतलब अगर आपको जितनी नींद हुई है उसकी क्वालिटी कैसी थी. एक होता है कि बहुत गहरी नींद आ गई, बहुत अच्छे से नींद हुई, या बीच बीच में मेरी नींद खुलती गई, डिसरप्ट हो गई स्लीप, या फिर मैं सोया तो था बट बिल्कुल मुझे अच्छे से नींद नहीं आई. तो ये भी जैसे आंसर है, क्वालिटी ऑफ स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं जैसे अभी लिख रहा हूँ कि ओके नॉर्मल स्लीप थी मेरी. एंड लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर जो है, हाउ इज योर मूड, आपका मूड कैसा है. अगेन मूड की जो रेंज दी गई है क्वेश्चंस में कि फीलिंग ग्रेट, वेरी रिलैक्स्ड से लेके एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड, मतलब जो भी कारण हो जिसके कारण आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपका मूड कैसा है. क्योंकि अगर आप स्ट्रेस्ड होते हो तो उस केस में भी क्या है कि आपकी रिकवरी इसका मतलब ठीक नहीं हुई. आपके माइंड के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी चीज चल रही जिसके कारण आप स्ट्रेस्ड हो, तो वो भी आप इसके अंदर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो. अभी मैं बात करते करते इन आंसर्स को भर रहा हूं तो इट इज टेकिंग स्लाइटली लॉन्गर टाइम, बट you can see that if you actually fill it up, it's not going to take long. At the most it will take 15-20 seconds. Then there is the last option that you can see, weight. So weight is again, it's just a demo question, so don't think too much about it. You don't have to fill up your weight every day, but this questionnaire is flexible. Your coaches and your physiotherapist, your trainers can actually customize this question as per your sport. I'm giving an example of boxing. The similar questionnaire can be there for other sports also, but suppose they want you to enter some kind of an information that will appear over here. So here suppose I'm just trying to fill up my weight, and then I can like enter that like this. And in the comments, if you want to enter any additional comments, you can enter these additional comments. But otherwise there is no need to add anything. But suppose you are trying to add some comment, you can always type it out so that it goes as a comment and your trainers can see that. So I can see that, yeah, I'm not feeling recovered from yesterday's training. So I'm just typing it out like this. So it's not compulsory. ये compulsory नहीं है comment भरना, आपको सिर्फ questions भरने हैं. Before I submit, again let me just take an overview. किस टाइप के questions है wellness में, कि आपके थकान के बारे में, that is fatigue के बारे में question है, muscle soreness के बारे में question है, health, sleep quality, sleep quantity. तो एक तरह से as an athlete
आपको एक ये रिमाइंडर भी है इन क्वेश्चंस के बारे में। जैसे जैसे आप अपने गेम में इम्प्रूव हो जाते हो और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, तो क्या है कि आपको अपने बॉडी के, आपके मसल्स के बारे में, आपके ओवरऑल मतलब जो बॉडी अवेयरनेस है उसके बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इन क्वेश्चंस के बारे में डेली सोचोगे, डेली इन क्वेश्चंस का आंसर भरोगे, तो उससे क्या होगा कि एक तरह से आप अपने बारे में एक बार सोच रहे हो कि मुझे एग्जैक्टली फील कैसे हो रहा है। मतलब मैं एक्चुअली फटीगनेस तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं मसल सोर तो नहीं हो रहे, क्या मैं सही टाइम पे सो रहा हूँ। इवन यू विल सी दैट योर डिसिप्लिन ऑफ स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। if you have to recover well and if you have to train more, then you need to get enough sleep. And many times we tend to ignore the requirement of sleep and may not get adequate sleep because of some, maybe sometimes the reason may be important, sometimes the reasons are not very serious, and we are not just disciplined enough to sleep on time, even though we know that we have to sleep on time as an athlete. So by asking these questions, by answering these questions daily, it can also become an important reminder for you to think about these areas, which are very very important areas for your training and your wellness, and focus on these things. You can actually think about it every day. Answering this question reinforces this concept that I have to get proper sleep, I have to sleep on time, I have to get good quality of sleep, so that I will recover well tomorrow and I can train better. Now I'm going to press submit button here. So this wellness questionnaire, once you submit it, then it will disappear from here. But now what happens after this is that as soon as you submit this questionnaire, the answers to this wellness questionnaire, it will go automatically to your coaches as well as trainers, and it will start appearing, and they will in case you have not recovered, in case you have not like reported that I'm not feeling well, or if the muscle soreness is pretty high, it will generate an alert in the system. It will also send an email to like your team members, and so that they know that you have not recovered, or they know that you have not feeling well. So that is the whole idea of putting this. Since you are filling up this information in the system, you also have complete access to the data that you're filling up. So I just filled up as a demo athlete. Now, if you see at the bottom, the first is a home icon. Home icon is where all these icons are going to come to you. The next icon is this bar chart. So if you click on the bar charts, you will be able to see your own data. So I clicked on the bar chart. Now the second question option is again here is wellness. When I click on the wellness part, I'm able to see my own data. Now, just to show you clearly, what I'm going to do is I'm going to come out of this mobile view, and I'll just try and show you as a website so that it's not very small and you can see it very clearly. So give me just a second. Okay. So I have made it bigger so that you can read it very, very clearly. So once you submit this wellness questionnaire, answers to them, the system is going to calculate a score. So you see this number 58 for today. Higher the number, higher is the risk for training. That is the principle that you have to remember. मतलब क्या है कि ये जो वेलनेस का जो स्कोर है वो एक तरह से रिस्क स्कोर के जैसे आप मान सकते हो। रिस्क स्कोर मतलब क्या है कि 100 में से जितना ज्यादा नंबर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा इंजरी का रिस्क है। आपके एक तरह से ट्रेनिंग को थोड़ा सा इजी करना जरूरी है। जैसे अभी का आज का जो मैंने आंसर्स भरे थे उसके बिहाफ पे उसके बेसिस पे सिस्टम में 58 स्कोर कैलकुलेट किया हुआ है, और आप देख सकते हो अपना जो अपने आंसर्स भरे हुए हैं वो आंसर्स के हिसाब पे बार चार्ट जैसे बना हुआ है कि फटीग 66.7% है, सोरनेस ज्यादा है, स्लीप क्वांटिटी भी ठीक नहीं है, मतलब वो एक तरह से रिस्क आपको ज्यादा है इन फैक्टर से। तो ये आप अपना खुद का भी डेटा देख सकते हैं। इसी तरह का डेटा इमीडिएटली आपके इसी तरह से आपको आपके जो कोचेस है, आपके जो ट्रेनर्स है, उनको भी ये डेटा दिख सकता है।
then you can also see the like जैसे अभी तो मैंने सिर्फ एक दिन का डेटा भरा हुआ है, बट जैसे अगर अलग अलग दिन का अगर आप डेटा भरते जाओगे तो आपको पूरी तरह से पहले के डेट का भी एक तरह से आपको ग्राफ बन के दिखता जाएगा और आपको उसके अंदर के ट्रेंड्स भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ AMS which you will be using, filling up of wellness questionnaires, and on the basis of this wellness questionnaire you can give the answers and all your staff members can get access to this particular data. The next feature इसका जो system का है कि suppose give me just a second, मैं जैसे अभी फिर से होम बटन के दबा के वापस सिस्टम में आ गया हूँ. हमने सबसे पहले वेलनेस का पार्ट देखा था कि वेलनेस क्वेश्चनर्स को आप कैसे भर सकते हैं और उसके अंदर से वेलनेस क्वेश्चनर भरने के बाद में आपका डेटा कैसे सिस्टम में जाएगा और आपको उसके ग्राफ्स और उससे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप किस तरह से देख सकते हैं. सेकंड आपको जो फीचर यूज करनी है, यहाँ आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे हेल्थ प्रॉब्लम्स करके है, जहाँ पे एक मेडिकल सूटकेस है उसके ऊपर प्लस साइन लिखा हुआ है. तो ये जो फीचर है इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इसको इस फीचर में आप यू कैन रिपोर्ट योर हेल्थ प्रॉब्लम्स. so it means what, as an athlete, suppose you get injured or if you're not feeling well, then you can report this health problem through AMS by clicking on this particular option. So what is the idea here is that suppose you are not in an academy and you are, let's say, staying at home, or if you're traveling and you have gone somewhere else, or even if you're in let's say some side academy or in your own training academy and you're not feeling well, then you can use this feature to report this health problem. Again, the idea is to capture all your injuries and illnesses in one place. Think that if you are regularly capturing everything which is like related to your health in the system, it will be available in one place to all your current as well as future trainers, because you may be traveling to different places, you may be working with different trainers at different stages in your life, and if anyone wants to see all your history of injuries, how the treatment was done, what medicines were given, how was the treatment done, which are the injury prone areas, then, or even let's say small niggles, any kind of minor issues also, you can always, if you're keeping everything in one place, then it will be very, very handy. So in that sense, you can think of athlete monitoring system, this app as some kind of a training diary. It's a very interesting way to think about it. Think that it's a training diary. It's your digital diary, which is stored in the cloud and which is available to you throughout your athletic career. आप इसको AMS को एक तरह से अपनी ट्रेनिंग डायरी के जैसे मान सकते हो, जो आपके ट्रेनिंग जो डायरी है, जो डिजिटल फॉर्म में है, जो एक तरह से क्लाउड में है और आपको कभी भी और कहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो. और आपको किसी से कंसल्ट करना है फ्यूचर में, आपके किसी भी ट्रेनर के साथ आपको काम करना है, तो उनको आपका पूरा पुराना डेटा भी आप इसके थ्रू दिखा सकते हो. Now I'm going to show you how to report a health problem. It's a very easy to fill up the form, and that is a feature which you will see in AMS. It is very, very easy to use. You have to just use it once or twice, and then you will find that it's very easy to use these features. Health problems are categorized in three different ways in AMS. It can be an acute injury, overuse injury, or illness. Acute, overuse and illness. इलनेस मतलब आपको पता है कि अगर तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम है, बुखार है या फिर कुछ और है, तो उसको आपको एज अ इलनेस रिपोर्ट करना है. इंजुरीज आप समझते हो, इंजुरीज दो तरह की होती है. एक है कि स्पेसिफिक कुछ हुआ था, सपोज जैसे मैं गिर गया एंड देन इंजुरी हो गई, और आई नो एग्जैक्टली यस्टरडे लेट्स से खेलते खेलते पांव ट्विस्ट हो गया था. So you understand that there is a specific cause because of which the injury happened, or you realize that over a period of time my shoulder started aching,
let's say my hamstring started aching, but I can't attribute a single reason for that. So depending upon that, you can classify your injury as either acute injury or overuse injury. Let me first take an example of, let's say, an illness. So suppose I'm not feeling well and I'm trying to report that into the system. So I can click on illness. जैसे आप ये option select करते हो, you will be asked the next question: when did you first notice the symptoms? So suppose मैं आज की injury या आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो मैं उसको report कर रहा हूँ. So 28th, I can always go here, a calendar pops up and I can change the calendar view. So in case you're trying to report something for yesterday, or let's say even a backdated injury, you can always report that. Next question is, can you still train or compete normally? मतलब क्या है कि क्या आप अभी भी ट्रेन कर सकते हो, प्रॉपरली नॉर्मली ट्रेन कर सकते हो? Answers are yes, partially, or no. So when you say no, it means that you're not going to be training, and when you select no, AMS will think that you're not training now, and it will count number of days from today onwards till that injury is fixed in the system as the number of training days which you're missing from training. Suppose you select partially, that means you continue to train, then it will not treat it as if like you're missing the training. So suppose I'm saying that yes, I'm able to partially train. Then the next question is this an emergency? Yes or no? When you say yes, it means that it is something serious and you need immediate attention. So if you're selecting option yes, then in that case, AMS is again going to generate an alert. It will shoot off messages and emails to all the relevant people who are there in the team. And you can also attach a file. So suppose you have taken any snap, any photograph of yours of the injury, or let's say anything else that you want to attach as a file, you can do that here. And the details are optional here. So in case you want to write something, you can write here. So I'm just saying that I'm feeling slightly feverish. So I can write that, and then I have to press the button submit. So as you can see, how many fields did I have to fill? Hardly anything. I have to just select illness. I have to select the date. Then the answer is, can you train or compete normally? मतलब क्या अभी भी आप ट्रेनिंग कर पा रहे हो? Yes, partially or no? क्या ये इमरजेंसी है? And details are of course optional. So again, 30 seconds, 40 seconds, definitely less than 1 minute. By capturing this information, I think you will be doing a great job of capturing your own data for your future reference. Otherwise क्या होता है कि if we don't capture the information immediately, that information is lost and we kind of forget. So in that way, if you keep a log of it, all your information is in one place and it is available for your team. So now let me try and submit this information. Now, if you see, when I'm submitting it, there is this circle going on and this message saved comes. This is important to remember, क्योंकि आपका डेटा आपके फोन में नहीं सेव हो रहा है, ये डेटा क्लाउड में जा रहा है, मतलब सर्वर तक जाता है. सर्वर से जब सेव्ड करके रिस्पॉन्स आता है तभी वो इंफॉर्मेशन सेव हुई है. कभी कभी एथलीट की ये मतलब प्रॉब्लम फेस करते हैं कि मेरा डेटा मैंने भरा था बट सेव नहीं हुआ. उसका कारण ये होता है कि हो सकता है कभी कभी आप वाईफाई के अंदर नहीं होते हो या आपका फोन का इंटरनेट कनेक्शन अच्छे से नहीं चल रहा होता, तो उस समय आपका वो फॉर्म सबमिट ही नहीं हुआ होता और आपको लगता है आपने भरा हुआ है बट वो सबमिट नहीं हुआ है. So always once you press submit button, make sure that you have seen a message saved. If it is the message is saved, it means that the server has sent that message that your information that you have saved is actually saved on the server. So again, once I've submitted this particular information, I can see now how it is going to look. So I'm going to the logs and stats. And in the health section,
you can see that illness is reported. Okay, so these two illnesses are being shown here. So one is on 18th and one is on 28th. So I had just put one like demo data here. So what is the meaning of undiagnosed here? It will look undiagnosed because once you have reported this information in the system, some medical doctor who also has an access to AMS will have to actually see you, and then they have to enter a proper diagnosis in the system. Only then the proper diagnosis will be shown against this particular illness. So right now क्या हुआ है कि आपने सिर्फ illness report कर दिया, उस illness को report करने के बाद में किसी ना किसी डॉक्टर ने इसको एक्चुअली डायग्नोसिस करके एएमएस के अंदर एंटर करना है। वो जब तक वो नहीं हो जाता तब तक इसको अनडायग्नोस्ड करके दिखाया जाएगा। आपको अपने ये एक तरह से इंजरीज एंड इलनेसेस का डैशबोर्ड जैसे दिखता रहेगा कि आपने अब तक सिस्टम में कितनी इंजरीज रिपोर्ट की हुई है, कितने इलनेसेस रिपोर्ट किए हुए हैं, ट्रेनिंग में आपके कितने दिन एक तरह से मिस हुए हैं बिकॉज ऑफ आइदर इंजरी और इलनेस, और आप कितना % अवेलेबल होते हो। इन डेटा को आप अपना डेटा है तो उसको आप एक तरह से सिस्टम से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सेल फाइल के अंदर भी डाल सकते हैं, एंड इस तरह से आपको अपना पुराना जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से दिख सकता है। Now let me just quickly try and show you how you will be able to enter an injury also. So you have to always, to come to this particular features, you have to press the home button. Then once you press the home button, you will be able to see all these options. Again, just to show you like how this whole thing is going to look in a mobile view, let me again toggle. Okay, so so this is the mobile view, so that you can remember how this is going to look when you actually see the app. This fourth icon in the second row, the first option is health problems. So again, I'm clicking on health problems. So you can also enter injury. So I'm just going to show you how to enter the injury. So again, I'm just toggling it so that you can see it slightly better. So suppose now I want to enter an injury that occurred. So I'm just clicking on acute injury. Once you click on injury, you will see like a human figure, and you can click on the appropriate body part to show that, you know, there is a pain. So suppose I have neck pain and I'm clicking here. Once you click on the body part, you will be able to see like this, like a dragging bar in which you can actually report the level of pain. So how painful it is on a scale of 10. So I have selected this number, and then it will again ask you, when did it happen? When did the injury happen? So suppose I'm reporting an injury which happened 2-3 days back. Then while reporting the injuries, there will be few more questions. What were you doing and how did it happen? That's all. Simple questions. When did it happen? What were you doing? How did it happen? मतलब आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। आपको इंजरी कब हुई है, आप उस समय क्या कर रहे थे, और कैसे हुई इंजरी। सो व्हाट वर यू डूइंग, मतलब एनी पर्टिकुलर ट्रेनिंग एक्टिविटी। तो सपोज मैं रनिंग कर रहा था, रनिंग के समय इंजरी हो गई, या बॉक्सिंग करते हुए कोई स्पेसिफिक इंजरी हो गई, और some other training activity, you can always select some other training activity. For each sport there will be sorry, I click somewhere else. Okay, so I've selected the neck again, and then date I'm trying to report it ki 25th ko hui hai injury. What were you doing? So there's some training activity. For each sport there will be different training activities, and then you can like select the proper training activity or whichever activity that you were doing, and how did it happen.
So did it happen because of collision with an opponent, क्या किसी कांटेक्ट के कारण हुआ, स्प्रिंट करते हुए हुआ, रेजिस्टिंग करते हुआ, किसके कारण हुआ? तो हर एक स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग इंजरीज के हमने सिस्टम में एंटर किया हुआ. सो राइट नाउ जस्ट for the purpose of demo, I'm showing like a boxing sport, but you will see that for each sport different training activities are available, different types of injuries are available. You can select whatever is appropriate. Then you can select, okay, can you still train and compete normally? And if you say no, it means that you've not been able to train properly. I'm again selecting partially. Other question is common, you have already seen this. Is this an emergency? And if there's any kind of a file you want to attach, you can do that and press the button submit. Okay, so the saved prompt has come, so you can say that the information is saved properly. Now if I want to see this particular injury also, then I can always go to the logs and stats section, and now you can see that there is one injury reported, there are 2 illnesses reported. So far I have shown you two important features in AMS which you can use it. And as you can see, the idea is to capture any niggles, injuries, pains, and before that what you have seen is the wellness monitoring part. So wellness monitoring is where your everyday sleep, recovery, fatigue, soreness, all these issues can be like can be captured in the system, and your team can actually help you individualize the training and minimize the injuries. In using AMS, I think one part which I want to definitely emphasize here is that once you start to use the system, please use it in a disciplined way. That means you have to like be very disciplined in filling up the training forms without anybody reminding you. Otherwise what happens, if you fill it up for a few days, then don't fill it up, so incomplete data is really no use. But I understand that it is a new system, it is something new that many of you would be doing, and if you're doing anything new, it is easy to forget the thing that you are doing. You may just simply forget, and it's totally normal to do that. So I think for the first 1 week or 2 weeks, you have to consciously remember it. You can decide that, okay, I'm going to fill up this questionnaire at 6 o'clock in the morning or 6:30 in the morning or whatever. Just keep a fixed time, and once you do it at a fixed time for a few days, it will become a habit, and you will find it very easy to do that. That is the first thing that you will remember, as soon as you wake up. So मेरा पॉइंट ये है कि कोई भी नई सिस्टम जब आप यूज करना स्टार्ट करते हैं तो उसको भूलना काफी स्वाभाविक होता है. हम भूल जाते हैं कभी बार ये सारी चीजें करना. तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि आपने एक तरह से हैबिट बनने में 1-2 हफ्ते कम से कम लग जाते हैं. जब तक हैबिट बन रही है तब तक आपको कॉन्शियसली याद रखना पड़ेगा. एक कोई स्पेसिफिक टाइम रखना पड़ेगा कि सुबह जैसे मैं 6 बजे 6:30 बजे, आपका जो भी रूटीन होता है, जितने बजे भी उठते हो, तो उठने के 5-10 मिनट के पहले जैसे सुबह ब्रश कर लिया, उसके बाद में इमीडिएटली ऐप में डेटा भर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, आपको आदत लग जाएगी, आपको हैबिट लग जाएगी, एंड you will never forget it. After 2 days, after 2 weeks of filling up the data, it will become your second nature, and you will never forget that. It will be very easy to fill up the information. The next feature that I want to quickly show you is the calendar part. Again, it depends on your coach and your team whether they are going to use this particular feature or not. The first 2 features that I have showed you, definitely I think most of you will be using this feature, which is wellness and reporting of the health problems. The other features which I'm going to show you, these are kind of optional. They totally depend on you and your team whether to use that. If you see the 4th part here, the calendar, in the first row, the icon which is on the rightmost side, calendar, I'm going to click here. So calendar is essentially a training calendar which is available for you.
So your coach can actually enter the training plan for the whole week or even the whole month here, and whatever is the training like entered into the system, you can actually see it in your mobile phone. That's like a great feature, because you can actually know beforehand like what the training is going to be, and you can actually see what the training is. I've just entered one demo training plan, and it is not actually a plan, but you can think that it is. I've entered a training session, which is the training that we are doing now. I have entered it here. So it's 12 o'clock, let's say, and this training is on introduction to AMS. And if you see this orange bar on the right hand side, if you click on that, then you will see the detailed training form which is like available here. Right now it is very easy. There is nothing actually. I've just entered the starting time as 12 o'clock on 28th of January, and then 1 hour training, and the training is nothing but introduction to AMS. But when your coaches enter the training, you can actually see the training activities in this particular form. There can be even workouts and a library of training that can also be seen here, and then you can actually give your feedback also on the training. These are two important training feedbacks. The first question is that how hard was the training? On a scale of 10, each training, like let's say you did 1 hour training, and you can actually give a feedback on a scale of 10. Using this method, it's a method of calculating training load. Many of you would have heard this term कि training load बढ़ाना है, training load को घटाना है, या अब training load बढ़ रहा है. So training load, how do you actually calculate it? I'm not going to get into the calculations here, but I'm just going to tell you that your training load actually can be easily calculated on the basis of your feedback on how hard was that training on a scale of 10. अगर सपोज आपका 2 घंटे का ट्रेनिंग हुआ है, तो वो 2 घंटे का ट्रेनिंग आपको कितना हार्ड लगा. अब ये जो आंसर है वो हर एक एथलीट का अलग अलग होगा. किसी को ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा, किसी को थोड़ा सा कम लगेगा. इसमें कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है. हर एक जने का आंसर है वो उसके हिसाब से सही आंसर है. आपको जो सही लगता है आंसर, उस तरह का आंसर आप भर सकते हो, मगर जो भी आप आंसर्स भरोगे उनको कंसिस्टेंटली भरते जाओ. जिस दिन आपको हार्ड ट्रेनिंग लगे, बहुत ज्यादा लगे, तो आप उसको ट्रेनिंग को हायर रेटिंग दे सकते हो. तो एज यू कैन सी द आंसर्स आर, जैसे अभी मेरा ये ट्रेनिंग सेशन आपके साथ चल रहा है, 1 घंटे का ट्रेनिंग है, इसके अंदर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं चल रही है. तो द ट्रेनिंग इज नॉट वेरी hard, it is very easy. It's almost like 0 or 1. But suppose you are trained a lot and you are sweating a lot, and you felt that your breath was quite elevated, breathing became hard, then you can always select values like very hard, like 7, 8, 9, like that, and you can always understand how the training was hard or it was not hard. So you can give actually your feedback that how hard was that particular training. So I'm just selecting like 5, and there could be additional questions also depending upon what your coaches want to get a feedback from you. One question can be simply like, okay, did you enjoy this particular session? It can be or like a training session. No, it was like not really good, I didn't enjoy, or I really enjoyed it on a various scale. In every training session, in case something needs to be measured, that can also be done. Again, I'm just showing for an example parameter like weight. That parameter can be entered over here, and then you can give a feedback on the each training activity also. So it means what? The training activity coaches can enter in the system. Once the training is complete, then you can give your feedback to the training. All right, so as you can see, the training will be available, and once the training is done, you can actually give a feedback on the particular training. Once the training you've given a feedback, you will see the color of this particular like box has changed. Did you notice that?
Earlier it was orange. Once I have given feedback, once the training is complete, I can click here, and once I have given like feedback and submitted it, it became green color. So using that, what happens is AMS is actually getting a feedback from each athlete on each training session, and the coaches will be able to like they will automatically get a training load on the basis of your training. So this is like a training plan which is already available in the system. But in addition to that, suppose you do any training activity on your own. You had some free time, you're feeling fresh, and you went for a run. So AMS allows you that option to capture your own training also. So if you see this icon on the right hand side, plus button. So if you click on that plus button, you can actually enter training on your own. So let me just quickly fill up an like activity. Suppose I went for a run today in a particular playground, and let's say I ran for 30 minutes and the running was pretty hard. So I'm giving a rating of 6, and I really enjoyed that running session. I can press submit. So this again session got saved. So as you can see, this running is also as an activity, it is captured in this. So all your training and the training activities, they will be calculating your training load, and you can always come and see what all types of training you have done. All your training activities will be shown here. So as you can see, let's say 1 hour of boxing training and half an hour of endurance. So you can actually see your own training graphs. And I just talked about the training load. The system has already calculated a training load. So 300 units of, let's say, this particular boxing related training and 180 units of cardio training. If you're really interested in understanding how this calculation is done, all these information is available to you. Feel free to explore AMS and see how these calculations are done. You can always see how these calculations are done. The training tutorials will be available to you every time you log in. The system will ask you, do you want to see the training tutorials? To make time to actually see the tutorials. आपको अगर इन चीजों के बारे में थोड़ा सा और जानना है, तो आप एथलीट मॉनिटरिंग जब भी लॉग इन करोगे तो आपको ट्रेनिंग के ट्यूटोरियल्स दिखाए जाएंगे. उनके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको ट्यूटोरियल्स के वीडियो ऑलरेडी बना के वेबसाइट के ऊपर रखे हुए, वो सारे आप वीडियोस देख सकते हो. I think we are almost like done with the training so far, but there's just one last feature which I want to show you. If you see the second option from the left hand side, questionnaires, on which this pop-up has come, from time to time either Sai or your trainers may assign you some questionnaires. मतलब time to time आपको अगर कोई क्वेश्चनर साई भेजती है तो आपको वो यहाँ पे इस आइकॉन पे अवेलेबल होगी. कहाँ पे होगी मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ. क्वेश्चनर करके जो सेकंड फ्रॉम लेफ्ट ऑप्शन है, उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तब आपको ये क्वेश्चनर दिख जाएगी. फॉर द पर्पज ऑफ टुडेज ट्रेनिंग आई एम जस्ट शोइंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चनर which is let's say food log. ब्रेकफास्ट का जैसे फूड लॉग जैसे बनाना है, मतलब आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कैसा था उसका अगर मुझे फीडबैक लेना है आपसे, तो उसके लिए जैसे सिंपली क्वेश्चनर बनाएंगे. अगेन द क्वेश्चनर्स आर वेरी इजी टू फिल अप. देयर इज नॉट मच ऑफ एन एफर्ट रिक्वायर्ड. Mostly you will have to select some kind of an option, one of them. Only a few times depending upon the questionnaire you may be asked to fill up some answers. जैसे खाने का टेस्ट कैसे था, जैसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का, तो अगर सपोज मुझे नहीं अच्छा लगा, आई कैन से दैट ओके इट वाज नॉट दैट गुड एंड इट कैन बी बेटर. क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, मतलब खाने में प्रोटीन आपके हिसाब से इनफ थे या नहीं थे. सो जो भी आपको जेन्युइनली आपको लग रहा है, आपका जो फीडबैक है वो आप एक तरह से दे सकते हो कि ओके नहीं इट कैन बी बेटर. फूड वैरायटी, मतलब खाना सेम तरह का मिल रहा है ब्रेकफास्ट में कि अलग अलग तरह का मिल रहा है. अगेन यू कैन गिव अ लाइक अ फीडबैक, नहीं वैरायटी तो है ठीक है. कलर ऑन द फूड प्लेट,
ज्यादातर आप देखेंगे कि डाइटिशियंस का ये क्वेश्चन होता है कि अलग अलग कलर्स है कि नहीं आपके खाने में, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हो कि नहीं, ऑरेंज तरह के ऑरेंज कलर है कि नहीं, मतलब गाजर वगैरह वेजिटेबल्स है कि नहीं। तो कलर ऑन द फूड प्लेट, हाँ यस इट इज देयर। सैशिएटी, सैशिएटी मतलब क्या है कि डिड यू फील फुल विद द मील, मतलब खाना खा के आपको एक तरह से पेट भरा या नहीं भरा। So yes, it is excellent, and then you can fill up. So again, I'm not saying this is a questionnaire which will be given to you. It just for the purpose of training and demonstration that we are using this questionnaire. It can be anything. The questionnaires can be sent or by even, let's say, physical trainers or physios, psychologists, dietitians, or let's say coaches from time to time. तो द क्वेश्चनेयर्स भी आपको क्या है कि आप मोबाइल ऐप से भी भर सकते हो, या आपके पास अगर लैपटॉप है और अगर आप रूम में लैपटॉप में जाके भी काम करना चाह रहे हो तो यू कैन ऑलवेज लॉग इन इनटू AMS using your laptop. So suppose I fill up these answers, and okay, this attachment and this text is like a mandatory in this questionnaire. So I say needs improvement, so my feedback will be given. Okay, and once you fill it up, you can see that the color has changed to green. Questionnaires में बहुत बार क्या होता है कि depending upon your answers, questionnaire may generate some kind of score. So let's say food test में, depending upon my answers, the system has given 1 point out of 3 points, possible 3 points. Quality of protein में 1 out of 3, food variety 2 out of 3, like that. So on the basis of this, total percentage point मैंने कितने दिए हुए. So it is a feedback from your side on that particular questionnaire. Again, don't generalize it. Different questionnaires have different formats. It totally depends on who's assigning the questionnaire and what is the purpose of that particular questionnaire. But the point is that you can always like go to this particular feature and submit your questionnaires and answers to those questionnaires. Last but not the least, important part is there's a messages feature. I just click on the messages at the bottom. You can select the coaches which are available in the system, coach or the trainer, and you want to send them any particular message. You can give the subject, you can type out the message and attach the file also. So the idea of these messages is that all the relevant communication on your training, on your diet, on your physical exercises can be always done through the system, and it stays in one place. So feel free to use this communication and the messages feature also, and you will see that all the relevant information, it stays in one place. What happens with WhatsApp and other systems is that they're pretty good, but over a period, if you change the phone, it may get lost. Sometimes the you start using a new ID, it gets lost, and important messages are not available in future. But suppose you like send at least the important messages through AMS to your team members, all the messages will be saved and they will be archived for you. You can always go back and check the documents and find them in one place. So just think of it as like a digital locker or as a digital diary. You can keep track of your training, you can keep track of your illnesses and injuries, you can keep track of your wellness, and the whole idea of this monitoring program is to help you get better, to help you stay fit, and help you achieve your goals. So that is like an overview from my side. I think I'll stop here. I think we have just finished the time as per what was planned. So if anyone has any questions, I'll be happy to answer. If there are no questions also, if there are any questions later on, feel free to contact us. Thank you very much for your time. Thank you, Vaibhav, for this wonderful session. So I will request all participants that if they have any question, you may ask. Please unmute yourself and ask a question directly to Vaibhav.
Miss Hello, Tanzila. Vaibhav ji. Am I audible? Yes, you are audible. Yes, yes, मैं सुन सकता हूँ आपको. Yes. I am Dr. Tanzila Taj, sports physiotherapist. Actually, I have been facing some kind of technical problem since last 1 month. मेरा login नहीं हो पा रहा है MS में और I have been changed my password 2-3 times. उसके बाद भी login नहीं हो पा रहा, तो मुझे आपसे पूछना है how to resolve this problem और whom to contact अगर किसी को contact करना है तो. आपका सिस्टम, आपका जो अकाउंट है वो कौन से सिस्टम में है? टॉप्स के सिस्टम में है कि किसी और सिस्टम में? जी, Actually, इनका अकाउंट CAIMS में है, टॉप्स वाले. टॉप्स में ही है ना? ओके. आई थिंक ट्रेनिंग के बाद में जैसे किसी को भी अगर लॉगिन में दिक्कत आ रही है ना, तो दो तरह से चीजें हो सकती है. आइदर अगर सिस्टम का कोई, अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स है, दे कैन सिंपली रीसेट योर पासवर्ड एंड हेल्प यू लॉग इन अगेन. एंड अगर आपको फिर भी persistent प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. और देयर इज one AMS support person. His name is Raju Bhairava, and we'll also share, I think, as a the landline number of our office. So feel free to contact us, and I think I'll take your details after this call is over, and we'll just look into it. Okay. Usually what happens, I'll since it is about login and password, पर सबके लिए ही ये पॉइंट है कि बहुत बार क्या हो जाता है कि हम अपना पासवर्ड टाइप करते हुए प्रॉपरली, मतलब कभी कभी लिखा, मैं ये नहीं बोल रहा आपके साथ ये हो गया होगा, बट जनरली AMS का जो रूल है पासवर्ड सेट करने का, वो ये है कि उसके अंदर एक कम से कम कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए. ये तीनों चीजें पासवर्ड के अंदर होनी चाहिए. और कभी कभी क्या होता है, हम टाइप करते हुए कैप्स, जैसे एक जो होता है ना कैपिटल लेटर, अगर प्रेस हुआ रहता है तो लेटर्स कैपिटल में टाइप हो जाते हैं, और हमें तो फिर मतलब वही रिप्रोड्यूस करने में दिक्कत आती है. सेकंड, यूजुअली जो मतलब मैक्सिमम जो रीजन होता है लॉगिन ना होने का, वो ये है कि जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखना कि AMS का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर, app.athletemonitoring.in, इस URL में आपको जाना है. मेजॉरिटी टाइम्स मैंने देखा है कि लोग app.athletemonitoring.com पे जाते हैं. .com मतलब क्या हो जाता है, वो सर्वर बाहर का सर्वर हो जाता है, और AMS जो पूरी साई की एंड टॉप्स की जो कॉन्फ़िगर्ड है वो इंडियन सर्वर्स के ऊपर है, तो वो आपकी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. .com का सर्वर है, तो एक बार आप वो डेफिनेटली चेक करना कि आप .in सर्वर पे जा रहे हैं कि .com पे जा रहे हैं. अगर आप .in पे जा रहे हैं और तभी भी नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली विल लुक इनटू इट, बट यूजुअली रीजन विल नॉट बी सीरियस. इट इज पासवर्ड कैन बी इजीली रीसेट, एंड आपको इनकन्वीनियंस हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे, सो आई थिंक यस विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट इमीडिएटली. बट जैसे किसी को भी लॉगिन का इशू आता है, just either reach out to the administrators in SAI, otherwise you can reach out to our AMS helpline also. Okay. वैसे .in ही है. ठीक है, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी, इसके बाद आप रिजॉल्व करिएगा प्लीज. एंड मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो अभी एथलीट्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज दिखाई है, तो ऐसे स्पोर्ट मतलब ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट हमें किस तरीके से करना है, उसका थोड़ा ओवरव्यू क्या दिया जाएगा. और अगर क्वेश्चन है जैसे हमें पुट अप करना है, तो हम कैसे क्वेश्चनियर बना सकते हैं इस AMS मतलब इस सिस्टम में. ओके, श्योर. आज एक्चुअली आज फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग है, एंड आज का मेन ऑब्जेक्टिव एथलीट्स को ट्रेन करना था, इसलिए हमने पूरी तरह से एथलीट के व्यू पॉइंट से ही दिखाया हुआ है एथलीट्स को कैसे दिखेगी सिस्टम. आई थिंक कल का जो ट्रेनिंग सेशन है वो कोचेस के लिए है, परसों का जो ट्रेनिंग है दैट इज फॉर द स्पोर्ट्स साइंस स्टाफ. तो उसमें आपको क्वेश्चनर्स कैसे बनाने हैं वो भी फीचर्स आपको मैं दिखा दूंगा. So that there is a 1 hour session only for sports science team. You can attend that particular session, and I'll cover that point day after tomorrow. Just want to correct you that now the session will be on 31st, not tomorrow. Okay. 31st, sure. And the session will be for coaches, support staff, and athletes. Okay.
Sure, I stand corrected. So आप एक बार everyone has to join on 31st, not tomorrow. Okay, तो आप एक बार just timeline confirm मतलब check करके उसके हिसाब से join करेंगे. Okay, thank you so much, Vaibhav ji. Welcome. Mr. Vaibhav, good afternoon. Good afternoon. मैं अमनप्रीत बॉक्सिंग कोच बात कर रही हूँ. Yes, good afternoon, ma'am. जी, मैंने ये अभी सेशन देखा और काफी समझा भी, और जो भी आपने पूरी जानकारी दी है, बहुत ही छोटी-छोटी बातों पर भी बहुत ही तफसील से एक-एक चीज आपने बताई, और सिस्टम में भी ये सब है. लेकिन मेरी 1-2 क्वेश्चंस हैं. जैसे इंजरी का था, उसमें कई सिचुएशंस डाली हुई हैं कि रनिंग करते हुए इंजरी हुई है, या कंडीशनिंग करते हुए, या स्पेसिफिक एक्टिविटी करते हुए. वो भी ठीक है, लेकिन कई बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. और क्या ऐसा कोई उसमें ऑप्शन हो सकता है कि वॉइस नोट या वीडियो वो लोग उसमें अपलोड कर सके कि हाँ ऐसे हुआ था, या फिर अपने आप को एक्सप्लेन कर सके इन हिंदी? ओके, लैंग्वेज में एक तो मतलब एक जस्ट आपको मैं बताना चाहूंगा कि लैंग्वेज डेफिनेटली चैलेंज होता है. तो अब जैसे ये जो फॉर्म्स, मुझे एक बार ये कंफर्म करना पड़ेगा कि इंजरी का पार्ट हम दिखा सकते हैं कि नहीं हिंदी के अंदर, बट अदरवाइज जैसे वेलनेस पार्ट जो है वो तो डेफिनेटली पूरी तरह से हिंदी में कन्वर्ट हो सकता है. तो AMS में क्या है कि मैं एक बार पर्टिकुलरली इंजरी का मैं कंफर्म कर दूंगा कि उसके अंदर हिंदी में हो पाएगा कि नहीं, बट अदरवाइज वेलनेस क्वेश्चन है तो कम से कम मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे ये जो क्वेश्चंस है कि डू यू फील टायर्ड टुडे, ये सब कुछ हिंदी में हो सकता है, और एक्चुअली जो बच्चे हैं आंसर हिंदी में टाइप कर सकते हैं. जी, क्योंकि इंजरी के जो भी हमने लिखा है, जो भी इसमें ऑप्शंस हैं, कई चीजें ऐसे हैं कि बच्चे वो टर्मिनोलॉजी से अवेयर भी नहीं होते हैं. तो उस तरीके से मैं चाह रही थी कि अगर वॉइस नोट के द्वारा, या फिर जो वो खुद से बता सकें कि हाँ मुझे ये सिचुएशन मुझे फेस हुई थी और इस सिचुएशन में मुझे इंजरी हुई, या पर्टिकुलर इस एरिया में उनको प्रॉब्लम है, तो वो और इजी बन जाता उनके लिए. ओके, आई थिंक ये फीचर डेफिनेटली आई थिंक आपका अच्छा सजेशन है कि वॉइस नोट कैसे ऐड कर सकते हैं सिस्टम में. अभी फाइल अटैच तो आप कर सकते हो डेफिनेटली, बट क्या एज अ वॉइस फाइल आप रिकॉर्ड करके डाल सकते हो? आई विल चेक द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट कि अगर अभी हो पा रहा है, क्योंकि फाइल्स तो अलग अलग टाइप की हो सकती है. तो यू कैन इवन अटैच लाइक सम स्मॉल लाइक इमेजेस एंड देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट हम डेफिनेटली ये फीचर ऐड कर सकते हैं सिस्टम में, बिकॉज इट्स अ गुड सजेशन कि किसी को अगर सिर्फ रिकॉर्ड करके डालना है तो वो भी हो जाना चाहिए. सो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, विल डेफिनेटली डू दैट. जी, थैंक यू मिस्टर वैभव, थैंक यू. और किसी के कोई क्वेश्चन है? Vaibhav ji, shall we close? Okay, sure. So thank you Vaibhav ji for this wonderful presentation. So thanks all participants for attending this session. Now we will meet on 31st. The session will be on same athlete monitoring system, but in a different manner. So it will be presented by again Vaibhav sir. So we will meet on 31st. So till then, goodbye and take care. Thank you. Thank you everyone. Thank you.